Good morning. Let us discuss about embryo and its development. Simply we can say embryo is a miniature plant which is composed of meristematic tissue. The pioneer cell of embryo is zygote. Zygote on further development mitotically divides to form embryo. Embryo is nothing but a miniature plant and is composed of meristematic tissue. Then so far as the embryo of angiospermic plant is concerned, we can simply say the embryo of angiospermic plant is of two different types. Number one is dicotyledonous embryo. Number two is monocotyledonous embryo. The embryo which has two embryonic leaf or cotyledon is known as dicotyledonous embryo, or it is called simply dicot embryo. And the embryo which has only one cotyledon is known as monocotyledonous embryo or monocot embryo. First, let us discuss about the structure of a dicot embryo. It is the embryo. Actually, embryo is nothing but a miniature plant. Embryo is a miniature plant. Embryo has an embryonic axis. It is embryonic axis, and from the embryonic axis, embryonic leaf or a cotyledon arises. Embryo has an axis. It is embryonic axis and embryonic leaves. Embryonic leaf or bhrunapatra is otherwise known as cotyledon or bhrunapatra or bijapatra. Then embryonic axis has two distinct parts. The part of embryonic axis which is present just above the origin of a cotyledon is known as epicotyle, and the part of embryonic axis which is present just below the origin of embryonic leaf is known as hypocotyle. Embryonic axis ro जेतिकी अंश कोटिलिडन ऊपर को अच्छी ताको कहते एपिकोटाइल, जेतिकी पार्ट कोटिलिडन तळु को अच्छी ताको कहते हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल टिप बा अग्रभाग को कहते रेडिकल. रेडिकल ग्रूज टू फॉर्म रूट. एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस रो जेतिकी पार्ट कोटिलिडन ऊपर को अच्छी, कोटिलिडन ओरिजिनेट हेतिबा पोर्शन रो ऊपर को एम्ब्रियोनिक एक्सिस रो जेतिकी पार्ट अच्छी ताको कहते एपिकोटाइल. एपिकोटाइल रो टिप को कहते प्लूम्यूल. प्लूम्यूल ग्रू करिकी सूट बा डाल हुए. प्लूम्यूल रु सूट बा डाल सृष्टि हुए. रेडिकल रु रूट डेवलप हुए. तो ये हला एई एम्ब्रियो देखो दीटा एम्ब्रियोनिक लीफ बा कोटिलिडन अछि, तो एटा गोटे डाइकोट एम्ब्रियो. तापर देखो ये गोटे एम्ब्रियो. ए एम्ब्रियो रो गुटी एम्ब्रियोनिक लीफ बा कोटिलिडन अछि, तो एटा को कहंदी मोनोकोट एम्ब्रियो. मोनोकोट एम्ब्रियो रो एटा हला एम्ब्रियोनिक एक्सिस. एम्ब्रियोनिक एक्सिस रु बाहरछि एम्ब्रियोनिक लीफ बा कोटिलिडन. तो ये मोनोकोट एम्ब्रियो रो ए सिंगल कोटिलिडन को कहंदी स्कुटेलम. स्कुटेलम. पुणी देखो एम्ब्रियोनिक एक्सिस रो जेतिकी पार्ट कोटिलिडन ओरिजिनेट हेतिबा पॉइंट रो ऊपर को अछि ताको कहंदी एपिकोटाइल. तळु जेतिकी पार्ट अछि ताको कहंदी हाइपोकोटाइल. एटा एपिकोटाइल, एटा हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल रो टिप को कहंदी प्लूम्यूल. हाइपोकोटाइल रो टिप को कहंदी रेडिकल. प्लूम्यूल ऊपर देखो गोटे प्रोटेक्टिव कैप अछि ताको कहंदी कोलियोप्टाइल. सेमती रेडिकल टिप रे गोटे प्रोटेक्टिव कैप अछि कोलियोराइजा. इट इज मोनोकोट एम्ब्रियो. ए एम्ब्रियो जेतु गुटी एम्ब्रियोनिक लीफ बा भ्रूणपत्र अछि, एटा मोनोकोट एम्ब्रियो. ए एम्ब्रियो जेतु दीटा भ्रूणपत्र बा कोटिलिडन अछि ताको कहंदी डाइकोट एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो रो डेवलपमेंट को कहंदी एम्ब्रियोजेनी. Development of embryo is known as embryogeny. Actually, the first cell of embryo is zygote. Zygote is a diploid cell. It is the first cell of sporophyte generation. Zygote on further development divides by mitosis method to form embryo. So the first cell of embryo is zygote. Zygote divides to form embryo. First, let us discuss the development of a dicot embryo. Then we will discuss the development of a monocot embryo. Development of a dicot embryo is of a very type. Among such, the commonest one is crucifer type of development.
Let us discuss the crucifer type of development of dicot embryo. In such case, zygote first mitotically divides to form two cells. It is a epibasal cell and it is a hypobasal cell. On further development, the epibasal cell divides longitudinally or vertically, but the hypobasal cell divides transversely. On further development, the epibasal cell further divides longitudinally but right angle to first division, and the hypobasal cell repeatedly divides by transverse division to form a series of cells. देखो এইটা জাইগোট ফার্স্ট ট্রান্সভার্সলি ডিভাইড हुए মাইটোসিস প্রসেসরে দুইটা সেল দিয়ে গোটে এপিবেসাল সেল গোটে হাইপোবেসাল সেল एपिबेसाल सेल लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हुए हाइपोबेसाल सेल ट्रांसवर्सल डिवाइड हुए हाइपोबेसाल सेल गोटे सीरीज एमती ट्रांसवर्स डिवीजन करिकी गोटे रोर सेल्स दिए तो यही सेल माने फर्दर डेवलपमेंट रे गोटे एमती एलोंगेटेड स्ट्रक्चर सृष्टि करती तो सेटा कहा जाए सस्पेंसर सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बट इट places the embryo in proper position. Suspensor is not a part of embryo, rather it places the embryo in proper position. तापर देखो ये जो एपिबेसाल सेल डिवाइड हुए एमती फास्ट लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन रो राइट एंगल पुनी सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुए जाफल 4 सेल्स डेवलप हुए दैट इज कॉल्ड टेट्राड स्टेज देन ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस एज a result of which 8 cells form. It is called octant embryo, octant proembryo means 8 celled proembryo. On further development, such octant stage proembryo divides by periclinal wall, 2 periclinal wall, as a result of which 3 layers of cells are formed which present in 2 tiers. It is upper tier, it is lower tier. Both the tiers bear 3 layers of cells. Among such, the outer layer is known as dermatogen. It is called dermatogen. It is called peribelum. It is called pleroma. It is dermatogen, peribelum, and pleroma. Then the cells of upper tier further development redivide होती है कि form करती cotyledon एवं plumule और lower tier form करे hypocotyl एवं radicle. तो एमती हुए जाइगोट डिवीजन रिडिवीजन है कि सृष्टि हुए डाइकोट एम्ब्रियो. देन मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखो मोनोकोट एम्ब्रियो और डेवलपमेंट बेले फर्स्ट जाइगोटा ट्रांसवर्सली डिवाइड एक दुटा सेल दिए एपिबेसाल सेल एटा कहते एटा हाइपोबेसाल सेल हाइपोबेसाल सेल ला एनलार्ज करके गोटे वेसिकुलर सेल फॉर्म करे वेसिकुलर सेल तो ये जो एपिबेसाल सेल फर्दर एमती लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करे देन फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन राइट एंगल सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुए देन ट्रांसवर्स डिवीजन हुए देन पेरिक्लिनल डिवीजन हुए तो एमती वे देखो सेल्स दुटा टायर रहती अपर टायर सृष्टि हुए कोटिलिडन प्लस प्लूम्यूल लोअर टायर सृष्टि करे हाइपोकोटाइल और रेडिकल. तो ये हूँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुए जाइगोट एम्ब्रियो फर्स्ट सेल जाइगोट माइटोसिस प्रोसेस रे डिवाइड होकर सृष्टि करे एम्ब्रियो. एक्चुअली एम्ब्रियोटा गोटे मिनिएचर प्लांट एम्ब्रियो केवल मेरिस्टेमाटिक टिश्यू रे तैयारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस रो जो पार्ट रु कोटिलिडन बाहर से पार्ट तल पार्ट हाइपोकोटाइल ऊपर पार्ट एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रो टिप रेडिकल बॉडी की हुए रूट एपिकोटाइल रो टिप प्लूम्यूल बॉडी की हुए शूट. तो इट इज ऑल अबाउट एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट. देन लेट अस डिस्कस पॉलीएम्ब्रियोनी. एटा फिगरटा को पूरा भल भाव फिगरटा पूरा भल भाव एति जाए भल भाव कर दियो.
polyembryony. Poly means many, embryony means development of embryo. Simply polyembryony means presence of more than one embryo in a seed. Presence of more than one embryos in a seed. Presence of more than one embryos in a seed is called polyembryony. Actually, seed is nothing but a matured ovule which bears embryo. Let it is the ovule. Ovule ro central part nucellus covering the integument. Tip रे थिबा narrow passage micropyle, basal portion चलादा. ये है embryo sac. Embryo sac भितरे double fertilization process रे सृष्टि हुए zygote और ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस तब कोनी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टा डेवलपिंग फॉर्मेशन करे ट्रिप्लोइड टिश्यू एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एंड ए जाइगोट डिवाइड रिडिवाइड की सृष्टि करे गोटे मिनिएचर एम्ब्रियो. मिनिएचर प्लांट सृष्टि करे तको एम्ब्रियो. ओव्यूल बियरिंग एम्ब्रियो इज नोन एज सीड. यूजुअली ए सीड बियर्स एन एम्ब्रियो. यूजुअली ए सिंगल सीड बियर्स वन एम्ब्रियो. गोटे सीड रे गोटे एम्ब्रियो रहे यूजुअली. कि जदि कोनोसी केस रे गोटे सीड भितरे मोर देन वन एम्ब्रियो थिबो ताले ए कंडीशन को कहंदी पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्मिक कोनिफेरस प्लांट. जिम्नोस्पर्म्स स्पेशली कोनिफेरस पाइन जातीय गछ. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज इन ए सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी. जदि गोटे सीड भितर एकाधिक एम्ब्रियो रहे ताले कंडीशन को कहंदी पॉलीएम्ब्रियोनी. एटा कोनिफेरस प्लांट बा पाइन जातीय गछ मान केस रे कॉमन. Then polyembryony is of two different types. One is simple polyembryony, other one is cleavage polyembryony. Simple polyembryony, then cleavage polyembryony. When more than one embryos develop inside the seed from different zygotes. When a number of zygotes involved in the formation of a number of embryos, then it is called simple polyembryony. In some cases, the embryo sac bears more than one eggs. As a result of which, after fertilization process, more than one zygotes form. যদি গোটে সিড ভিতরে একাধিক জাইগোট ফর্মেশন হবে তো প্রতি জাইগোট বড়ি গোটে এমব্রিও হবে. যদি একাধিক জাইগোটর একাধিক এমব্রিও সৃষ্টি हुए সেটা কোনটি সিম্পল পলিএমব্রিওনি. কিন্তু যদি গোটিয়ে জাইগোটর ক্লিভেজ হেকি একাধিক এমব্রিও সৃষ্টি হবে, গোটিয়ে জাইগোটর ব্রেকডাউন হেকি যদি একাধিক এমব্রিও সৃষ্টি হতে সেটা কোনটি ক্লিভেজ পলিএমব্রিওনি. পলিএমব্রিওনি ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই কার্লোস লিনিয়াস. পলিএমব্রিওনি ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই Carlos Linnaeus. Sorry, Antony von Leeuwenhoek. Sorry, Linnaeus or Antony. Polyembryony was discovered by Linnaeus. Sorry, Linnaeus. That's all. It is all about polyembryony. Then let us discuss apomixis. Reproduction of a plant without gametic fusion. Reproduction of plants
without gametic fusion is known as apomixis. Apomixis is of two different types. Number one is vegetative propagation. Number two agamospermy. रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट गैमेटिक फ्यूजन जदि गैमेटिक फ्यूजन न होई कि अर्थात जो गोटे प्लांट जदि मेयोसिस न हुए गैमेट फॉर्मेशन न हुए फर्टिलाइजेशन न हुए किंतु जदि नुआ प्लांट अन्य वे रे फॉर्मेशन हुए जदि गैमेटिक फ्यूजन न होई कि अन्य वे रे गोटे प्लांट रिप्रोडक्शन करे ताल सेटा को जो apomixis. Apomixis takes place by two different methods. One is vegetative propagation, other one is agamospermy. In many plants, vegetative parts such as a root or stem or leaf involved in reproduction. So that is called vegetative propagation. In such cases, there is no participation of gametes. So it is one type of apomixis. Vegetative propagation रे कौन सी गैमेट इनवॉल्व होती प्लांट रो वेजिटेटिव पार्ट रूट बा स्टेम बा लीफ रु नुआ प्लांट सृष्टि हुए तो सेटा गोटे प्रकार एपोमिक्सिस. देन आउरी किछि केस रे गैमेट फॉर्मेशन हुए नी गैमेटिक फ्यूजन हुए नी किंतु एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुए. तो जदि गैमेटिक फ्यूजन न होई कि अन्य वे रे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुए सेटा कोन आगामोस्पर्मी. आगामोस्पर्मी इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1 इज पार्थेनोजेनेसिस. then adventive embryonic. जदि गोटे प्लांट रो गैमेटिक फ्यूजन न होई कि अर्थात सेक्सुअल फ्यूजन न होई कि जदि रिप्रोडक्शन हुए कोन एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस प्लांट रो जदि वेजिटेटिव पार्ट द्वारा हुए रूट स्टेम बा लीफ द्वारा दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जदि कौन सी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुए गैमेटिक फ्यूजन न होगी तो कहते आगामोस्पर्मी. आगामोस्पर्मी इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स पार्थेनोजेनेसिस एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. पार्थेनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट गैमेटिक फ्यूजन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. यदि फर्टिलाइजेशन न होगी एम्ब्रियो की न्यू प्लांट सृष्टि तो कहते पार्थेनोजेनेसिस. तो बहुत केस बहुत आंजियोस्पर्मिक प्लांट अच्छा से एग बा फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन न होगी भी एक बार फीमेल गैमेट डायरेक्टली बढ़ी के एम्ब्रियो हुए दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. एटा प्लांट एनिमल उभयर कैरेक्टर. देन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जी किछि प्लांट करो आदु मेयोसिस हुए नी ओव्यूल भितरे तो ए न्यू सेल्स रो डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली बढ़ी के एम्ब्रियो हो जाए. जदि गोटे ओव्यूल भितरे मेयोसिस न होई अर्थात एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन हो नथिबो गैमेट फॉर्मेशन हो नथिबो टोटली न्यू सेल्स रो गोटे सेल डायरेक्टली जदि बढ़ी के एम्ब्रियो हुए सेटा कोन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. So it is all about apomixis. Apomixis means reproduction of a plant without gametic fusion. That's all. It is all about this topic. The plant reproduction already finished. Plant reproduction already sorry. Plant reproduction possible long question है. Number 1, double fertilization process. Number 2, development of male gametophyte. Number 3, development of female gametophyte. ये लॉन्ग क्वेश्चन 3टा डबल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेटोफाइट आ भी तो जेकोसी गोटे पड़ी पारे. देन डिफरेंसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस. न्यूक्लियर एंड cellular endosperm, syngamy and triple fusion.
कार्पी and parthenogenesis. Cell pollination and cross pollination. These are differences. Short note. Hercogamy, dichogamy, three parthenocarpy, triple fusion, endosperm, polyembryony, aponesis, that's all. It is all about plant reproduction. प्लांट रिप्रोडक्शन ये तीन लंग क्वेश्चन को भल भाव प्रैक्टिस कर ये डिफरेन्स शॉर्ट नोट लिखिद समय पाइले मुझे भेरीफाई करी दैट्स ऑल।